Today we are going to discuss, new chapter. That is the, Today we are going to discuss, new chapter. That is the, Today we are going to discuss, new chapter. What it यहाँ पे you can see the the what topics you have to cover here. First of all, you have to see the how the concept of grouping of element according to their properties and that lead to the development of modern periodic table as well as Mendeleev periodic table. Later on, we have to understand what is the periodic law and what is the significance of atomic number and electronic configuration, on what basis classification of the element was done. Got it? In the third case, name the element having atomic number more than 100. That will be according to IUPAC. And after that, classification of element into the blocks, SPDF, the blocks. How to identify the elements and the periodic tables on the basis of the chemical properties, comparison of the reactivity of elements, and correlate it with their occurrence in the nature. Later on, we have to explain the relationship between the ionization enthalpy, metallic radii, and some other properties of the element. And the last topic, we have to study the scientific vocabulary of appropriately the communicate ideas related to certain important properties of the atom like atomic, ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, and valency of element. Now, the first question arises, what is the need to classify the element? If you see that, this is the beginning heading. What is the need to classify the element? You take the example of any school, in the school may have, 5,000 students, maybe, 2,000 to 5,000 students. हमें उनको हम एक प्लेस पे नहीं रख सकते, वी नीड टू क्लासीफाई देम. केजी के बच्चों को हम अलग रखते हैं, क्लास 1 के बच्चों को सेपरेट करके रखते हैं. 9th, 10th, 11th, 12th, all the students must be seated separately in different class. Then study, even teaching will be a little more easier, हम उनको recognize कर सकते हैं, हम उनको पढ़ा सकते हैं बहुत easy तरीके से. और सारे अगर फील्ड में घूम रहे हो, there is no separate line, you cannot teach at all. और what is the more benefit, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हो, क्लास में जाते हो, क्लास 10 में चले जाओ, तो अगर आप एक स्टूडेंट के बैग चेक कर लो, व्हाट इज द बैग, व्हाट इज द सिलेबस, है ना, एंड व्हाट इज देयर करिकुलम, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इंटायर क्लास. आप पूरे क्लास की हमें एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है. तो दैट इज द नेसेसिटी. ये हमारे लिए मेन है कि एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई क्यों करें. बिकॉज आफ्टर द क्लासिफिकेशन स्टडी इज गोइंग टू बी वेरी इजी. स्टडी जो हम करते हैं बहुत आसान हो जाती है. Earlier, अगर हम बात करते हैं, तो there was only 31 element in 1800 centuries, and 65 year later on, if you see that 1865, number of elements going to be nearly double. It was nearly 63 till Mendeleev. बात करें तो 63 elements at present. Written in NCERT 114, but you are having 119 elements. Got it? 119 elements nowadays. No. First and foremost, first of all, the first effort was done by the German chemist. His name was Johann Dobereiner, and that was done in 1800. He was the first to consider the idea of trend among the properties of the element. और ये हमारा था डॉबरीनर ट्रायड. तो फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना, दैट इज डॉबरीनर ट्रायड. You can answer this is the Dobereiner triad. What about this triad? हम अगर इस ट्रायड की बात करें, this is your Dobereiner triad. A triad means a set of 3 elements. A set of 3 elements having similar properties
सेट ऑफ थ्री एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ग्रुप टुगेदर, जिनको हम एक साथ रख देते हैं, and their property must be similar, the property must be similar. तो डॉबरिनर ट्रायड की अगर हम बात करेंगे, here we can look that ट्रायड का क्या बेस, वर्बल मीनिंग ऑफ ट्रायड, डॉबरिनर ट्रायड शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डी ट्रायड. तो यू विल राइट दैट अ सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, a set of three elements having similar properties, set of three element having similar properties. Having similar properties. A set of three element having similar properties, इसी को हम ट्रायड बोलते हैं. In which जिसमें डॉबरिनर ने क्या देखा, एटॉमिक वेट ऑफ atomic mass of middle element was arithmetic mean of first and third element. Got it? डॉबरिनर ट्रायड में, डॉबरिनर इज द नेम ऑफ डॉबर च्यवनप्राश, मत बोल देना डॉबरिनर ट्रायड, डॉबर इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड ब्रांड ऑफ तो डॉबरिनर ट्रायड की हम बात करेंगे. सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन विच atomic masses of middle element was arithmetic mean of first and third element. तो फर्स्ट ट्रायड इसकी, इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ट्रायड वाज lithium, later on there is sodium, then there is potassium. Atomic mass of lithium was 7, potassium was 39. Do the sum. 39 plus 7 divided by 2. 46 divided by 2 is going to be 23. So here we can observe that the atomic mass of sodium is arithmetic mean of lithium and potassium. A set of three element having similar properties. ग्रुपिंग करते समय इस बात का डॉबरिनर ने इस बात की ध्यान दिया कि ऐसा ना हो कि मेटल को नॉन मेटल के साथ ग्रुपिंग नहीं करनी है, नॉन मेटल में या मेटल को कभी हम नोबल गैसेस का ग्रुपिंग नहीं कर सकते. A set of three element having similar properties in which mass of middle element was arithmetic mean of first and third, इसको हम डॉबरिनर ट्रायड के नाम से जानते हैं. वन द सेकेंड ट्रायड की अगर हम बात करें, व्हाट इज द सेकेंड ट्रायड,
there was second triad, that is calcium first, then the strontium was there, then there is a barium. Calcium, strontium, and barium. And atomic mass of the calcium is going to be 40. Atomic mass of barium is going to be 137. And if you do the sum, you will get 177. Finally divide by 2. This is going to be 88.5 approx. The strontium atomic mass is nearly 88. That is very close to that data, you know. Not only the atomic mass की बात करें, all are having same valence. Calcium valence is 2, strontium valence is 2, barium valence is also 2. The valence is also same. Later on, we will go with the third triad. And third triad was that was the chlorine, bromine, and iodine. Chlorine mass is how much? 35.5. Iodine is 127. Do the sum. $162.5 divided by 2. It's going to be nearly, 81.25. But the exact scenario is nearly 80. The atomic mass of bromine is approximately, arithmetic mean of first and third. This is the third triad. See the NCERT, this is the three triads are there, अपने 3 triads को याद करके रखना है. So this, what kind of the question will ask from this topic, Question may be asked, the like that. I will give you one example. पूछा जाएगा which of the following is not double Chonparas? No. Dobriner triad, got it? Dobriner triad. I will give you some triad, but you have to identify that कौन सा particular Dobriner triad नहीं है. First is lithium, sodium, potassium. Option B is chlorine, bromine, iodine. Option C is calcium, strontium, and barium. And option D is boron, aluminum, and gallium. Keep the answer it's very quickly. Yes. Option is D correct. Because अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो आपको पता लग जाएगा कि जो है उसकी पहले हमें इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम is there. Chlorine, bromine, iodine is already there. Calcium, strontium, barium is also there, but this is not there. So this is the correct answer. This is the way to ask the question on this topic. So that is not very tough, very easy. Next after that, but this is not success for a longer time. आगे बहुत ज्यादा इसकी सक्सेस हमें नहीं मिलती है. This is for failed, finally, because अपने ही ग्रुप में देखो तो क्लोरीन ब्रोमीन में फ्लोरीन फॉलो नहीं कर रहा है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट, बट एटलीस्ट जहां कुछ भी नहीं था
तो इन्होंने क्या किया, क्लास के बच्चे, लेट इन योर क्लास थे 30 स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, 3-3 के ग्रुप बना दिए, 3-3 के ग्रुप में बैठना है, एक बेंच पे 3 को बैठना है सबसे। तो उसमें सेटिंग करते समय ध्यान दिया कि बॉयज को बॉयज के साथ बैठा दो, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ बैठा दो, लाइक दैट, मेटल मेटल, नॉन मेटल की ग्रुपिंग कर ली। देन आफ्टर he checked little more property and finally he got a conclusion, an interesting fact कि जो मिडिल में एलिमेंट बैठ रहा था उसके एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के अरिथमेटिक मीन मिल रहे थे। So this was a very good effort, you know. Now after this you have to see your NCERT and where you have to discuss the another one, that effort was done by Newlands। तो ये 1800 सेंचुरी से हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें मिलेंगे न्यूलैंड्स ने एक अच्छा एफर्ट किया। न्यूलैंड्स हैज गिवन another law that is known as Newland's law of octave। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octave। So if you see that Newland's law of octave, what is Newland's law of octave? न्यूलैंड को याद करने का तरीका क्या, न्यूजीलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू कैन गो फॉर एट द जर्नी। तो न्यूजीलैंड याद करके रखो, न्यूजीलैंड, व्हाट इट। तो न्यूजीलैंड, तो न्यूलैंड इज द साइंटिस्ट, बट वो न्यूजीलैंड के रहने वाले नहीं थे, बट याद करना है उनके नाम को न्यूजीलैंड के हिसाब से, व्हाट इट। व्हाट ही डिड, he arranged the element in increasing order of atomic mass, got it। if you see that lithium mass number is 7, beryllium is 9, and this is 11, this is the 12, this is the 14, this is the 16, this is the 19। So this arrangement is done in increasing order of atomic mass, order of atomic mass, where he was surprised to see that every eighth element shows similar property with the first one। अगर हम लिथियम को बोलते हैं योर रोल नंबर इज 1, तो बेरिलियम का रोल नंबर 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस विल बी 6, दिस विल बी 7, दिस विल बी 8। आप बोलते नहीं नहीं, बेरिलियम का रोल नंबर 1 मान लो, कोई बात नहीं, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6, this will be 7 here and this will be 8। every eighth element shows similar property with the first one। ये इनका मेन था। what he did, he means Mendeleev arranged the element in increasing order of their atomic mass, increasing order of their atomic mass। where every eighth element shows similar properties with first one। with the first element, every eighth element shows similar property with the first one। Here in the element in increasing order of the atomic mass, where every eighth element shows similar property with the first one। Got it? But again, यहां तक जाते जाते यहां लिख देना द इंड।
तो ये लाइटर एलिमेंट में applicable, it is not applicable after 20. So this is applicable only up to 20. So first notable point is that Newland has not included, इन्होंने include ही नहीं किया था noble gases. There was no noble gas. No place for noble gas. This is the one of the drawback. Got it? आप ध्यान से केयरफुली अगर इसको देखो तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन देन आफ्टर नियॉन इज सपोज टू बी देयर. नियॉन इज नॉट देयर बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली सोडियम मिल जाता है. Similarly, magnesium, aluminum, silicon, and after that phosphorus, then sulfur, then chlorine, but argon is not there. You have to reach directly in potassium. तो आपको ऐड नहीं करना, बस आपको बता देना है कि what achievement was done by Newlands. Got it? Finally, after the classification, इनकी कुछ जो कमियां थी उसके बता देना है कि in his classification there was no noble gases was not there, but at least he has उन्होंने एक बहुत अच्छा एफर्ट डाला जिसकी वजह से एक अच्छा क्लासिफिकेशन हमें मिला. तो देयर वेर नो प्लेस ऑफ नोबल गैसेस. सेकंड, it is not applicable for higher element. It is applicable up to only atomic number 20. Applicable only up to calci. It is applicable only up to calcium. Now, we can take a question on this. So the question number 2 on this topic. The question number 2 on this topic. Which of the following set of elements not belong to, which of the following set of element not belong to Newland's law of octave? So before putting the answer, I'm just going to write the answer, but I will give you the complete question first. Option A. Option A is there, Suppose this is the lithium. Option A is there, sodium and potassium. Suppose this is the lithium. Option B. Option beryllium, magnesium and calcium. Option C is your option C is your, you can put here, suppose helium, neon and argon. And option D is none of these. So you can put your answers. I hope you can easily identify very carefully that कौन सा आंसर हमारा इसमें हो सकता है. Your answer is going to be C. Okay. So this is the answer because noble gases हमने पीछे भी देखा, there was no place for noble gases. No place for noble gases, and that was your answer. So C option is going to be helium, neon and argon. That is the noble gas. नोबल गैसेस को उन्होंने कोई प्लेस ही नहीं दिया था, तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा. आई होप एवरीवन गॉट इट. ये बहुत ही इजी था. चलो हम थोड़ा सा भी क्या करेंगे, बिफोर गोइंग अहेड वी विल लर्न द नेम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स
हम कुछ नाम याद कर लेंगे. You are going to remember your name of your elements. Name of your elements like ग्रुप फर्स्ट में एलिमेंट्स की नेमिंग हमें याद होनी चाहिए. दैट इज द हेलिना करे रब से फरियाद. हाइलिना, हेलिना करे रब से फरियाद. हेलिना करे रब से फरियाद. आप इसमें एच की जगह हाई भी लिख सकते हो. हाई लीना. लेट द लीना इज द नेम ऑफ एनी गर्ल. लीना. के से आपका क्या लिखना? करे रब से फरियाद. रब मीन्स गॉड. से में आपको लिखना है CSE. इन हिंदी हम इसको से भी लिख सकते हैं. फरियाद मीन्स प्रेयर. इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी है. कॉमन वैलेंसी इनकी क्या होगी? 1. फिर कॉमन वैलेंसी इज गोइंग टू बी 1. एंड एक्सेप्ट द हाइड्रोजन की बात अगर करें तो ये +1 भी शो करेगा. इट इज -1 ऑल्सो बिकॉज हाइड्रोजन इज अ लोफर एलिमेंट. अब लोफर की स्पेलिंग तो सबको आती है. LOFER. गॉट इट. तो जिन लोगों को लोफर की स्पेलिंग आती है वो सारे के सारे लोफर है ना. तो लोफर की हाइड्रोजन लोफर एलिमेंट क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करता है. जो दे दे उसका भी भला, जो ले ले उसका भी भला. गॉट इट. Hydrogen is the element that can do both. That can lose electron as well as that can gain a electron also. Got it? हाइड्रोजन का जो हाउस है ना 1 BHK का घर है. देयर इज ओनली K सेल. तो इट इज वेरी हैप्पी नो. ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देता है और ये गेन भी कर ले सकता है. इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन गिफ्ट हैम्पर दे दे दिस विल मेक H-. बनाने से हीलियम जैसा हो जाएगा. तो ये ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कब कैसा ऑफर है. तो जैसा ऑफर मिलता है वैसा काम करता है. गॉट इट. तो योर पोटेशियम इसका लैटिन नेम भी याद होना चाहिए. सोडियम इज नोन एज नाट्रियम और के इज नोन एज कैलियम. है ना. कैलियम एंड रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम. इसका नाम है रुबिडियम. रुबेडियम. रुबेडियम. गॉट इट. एंड दिस आई एम सीजियम. मैं सीजियम हूँ. मैं बहुत पैसे वाला हूँ. and I am a francium. I am a radioactive element. I live in France. That is my address. Got it? तो फ्रांस में रहता है ये. फाइनली द वेरी लाइट. इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं? ऑल आर ब्यूटीफुल कली. ऑल आर एल्कली. ये ऐसी कली जो कभी खिलती नहीं है. चलो एक इस पे कहावत लिखता हूँ मैं. ऐसी कली जो खिलती नहीं. कौन सी कली है? तो सब बोलते हैं छिपकली. मैं बोलता हूँ एल्कली. एल्कली भी नहीं खिलती. गॉट इट. तो छिपकली वाली है ना. यू नो कली मीन्स बर्ड्स. फ्लावर बर्ड्स होती है ना जिसके फ्लावर नहीं बनते. तो छिपकली के बर्ड्स, छिपकली के फ्लावर थोड़ी बनते हैं. तो एल्कली के भी फ्लावर नहीं बनते. बट they are most reactive element in entire periodic table. Most reactive metals. Most reactive metal. तो अगर इनका कंपटीशन कराया जाए है ना, कौन सा कंपटीशन कराएंगे इनका? तो इनका कंपटीशन हमें कराना पड़ेगा मोस्ट हैंडसम इन यूनिवर्स. है ना. इनका नॉन मेटल तो है नहीं. तो इनका कंपटीशन कुछ हमें ऐसे करना पड़ेगा. तो दे आर गोइंग टू वेरी डोमिनेटिंग. बहुत पैसे वाले लोग हैं. दे कैन डू डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू एनी वन. है ना. इनके बस
इनको आपको लाने का दे रहा है, ये किसी के घर में तलाक करा देता है। अगर मैं यहाँ पोटासियम ले लूँ, इसका रिएक्शन में अगर कापर के घर में कापर की क्लोरीन से कराऊं, तो जैसे क्लोरीन को पता लगेगा कि पोटेशियम ने मुझे ऑफर दिया है, वो तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी, केसीएल बना देगी। और कापर बेचारा तलाक तलाक तलाक। और एक, तो ये हम देख सकते हैं, ये बहुत पैसे वाली पार्टी है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, किसी के घर में भी तलाक कभी भी करा सकती है, पानी में भी आग लगा देता है। तो ये लोग मोस्ट यंगेस्ट पर्सन इन पीरियोडिक टेबल ऐसे मान सकते हैं, मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट यंगेस्ट और मोर रिएक्टिव इन ऑल केस। बट मोनोवैलेंसी, ज्यादातर इनकी मोनोवैलेंसी रहती है, द बैलेंस इज ऑलवेज फिक्स। और इसके बाद आता है ग्रुप सेकंड एलिमेंट, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ग्रुप सेकंड एलिमेंट, द ग्रुप सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करें, वी शुड रिमेंबर लिटिल बिट इन देम आल्सो, दैट इज, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ऊपर हमने बोला था एल्कली मेटल्स, एल्कली मीन्स बेसिक, नॉट ओनली बेसिक, दे आर वाटर सॉल्युबल बेस, ये पानी में ना डिजॉल्व हो जाता है, वाटर सॉल्युबल। अगर लैब में अगर आप कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो ये इट इज hygroscopic in nature, or not hygroscopic, but more than that, it is deliquescent. हाथ में लेते ही ना सराउंडिंग से मॉइस्चर ले लेगा, स्लिपरी हाथ सोप जैसा हो जाएगा। और दे आर वेरी रिएक्टिव, योर हैंड विल बी वार्म अप, हाथ गर्म हो जाएगा, बिकॉज ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही बिहेवियर इसका भी है। और अगर स्मॉल क्वांटिटी अगर आप अपने टंग्स पे कभी रख लो, तो आपकी टंग्स की जो टेस्ट बर्ड्स है ना, वो पूरी बर्न आउट हो जाएंगी, एंड यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग। दिस इज द प्रैक्टिकल, यू कैन डू, बट दिस इज वेरी डेंजरस। आई विल नेवर सजेस्ट कि आप ही करो, लेकिन आप अगर कभी डेयर टू डू, है ना, लाइफ में आदमी को कभी कभी डेयर करके करना चाहिए। तो अगर आप कर रहे हो तो भी, आप यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, डोंट ब्लेम मी कि सर ने बोला था तो मैंने किया, गॉट इट। लेकिन मैंने जो आपको बोला वो आप करके देखना, एंड यू विल गेट श्योर व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू। टंग्स में जहां पे आप NaOH की पिलेट्स को रखोगे, जैसे टैबलेट जैसी होती है, रस करके रख दो, immediately you will start bleeding from your tongues. That is a very one of the very dangerous experiment, nothing will happen, that is not going to harm our life, but क्योंकि सोडियम हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और आपकी टंग से ना ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपका, यू कैन सो मैजिक बॉडी, ब्लड फ्रॉम माउथ, बट यू विल स्टार्ट पेन आल्सो। तो चलो एल्केनाइल अर्थ मेथड की बात करते हैं, व्हेयर वी गेट, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंड फाइनली रेडियम। तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12, गॉट इट। आप इसमें मैजिक नंबर ऐड कर सकते हो, एंड देन अंदर मैजिक नंबर इज 20, अंदर मैजिक नंबर इज 38, अंदर मैजिक नंबर इज 56, अंदर मैजिक नंबर गोइंग टू बी 88, गॉट इट। और ये इसकी पोयम अगर हम याद करते हैं, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, कन्या सुंदर बाप राजी, सुंदर एंड बाप राजी। तो दिस इज गोइंग विद दैट, जहाँ पे बेटा मीन्स यहाँ पे बेरिलियम, BERY LLIU, बेरिलियम,
and after that magnesium, this is the calcium, अंदर is your strontium, और ये बड़े मजेदार है ना, ये alkali metal हो, maybe alkaline earth metal, they're very much good, they have a tendency to show the color, सारे के सारे कलर शो करते हैं, सारे पटाखे में हम इनको बहुत यूज करते हैं। बेरियम, तो बेरियम की लाइफ हरी भरी रहती है। द रेडियम, रेडियम इज रेडियो एक्टिव, तो इनको अगर डायरेक्टली बर्न आउट करो तो बेरिलियम तो ब्रिलियंट वाइट रहेगा, ये थोड़ा सा कलर हमें थोड़ा कम ही से करे, लेकिन मैग्नीशियम की रिबन आपने बर्न होते हुए देखा होगा, तो दैट इज dazzling white light। कैल्शियम बोलता है आई एम ब्रिक रेड, इसको बर्न करोगे ब्रिक रेड वाला कलर आता है। एंड स्ट्रोंशियम इज गोइंग टू बी पिंक, इट्स नॉट पिंक, क्रिम्सन रेड, सीम्स टू बी पिंक। बेरियम, बेरियम की लाइफ ग्रीन होती है, इट इज अ ग्रीन बॉक्स। पटाखे में अगर आपको ग्रीन चीज अगर मिल रहा है तो वो हमारा बेरियम उसका सप्लाई है। और रेडियम हम डालते नहीं, रेडियम इज वेरी एक्सपेंसिव, व्हाट इट, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट मच मनी। रेडियम हमारा एटम बम बनाने में यूज होता है, जो रसिया आजकल प्लान कर रहा है यूक्रेन के अपोजिशन में, गॉट इट, तो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। और में एक और केमिस्ट्री का फैक्ट है इसमें मालूम, अगर हैवी मेटल्स आप किसी को खिला दो ना कुछ दिन, तो पार्टी करते करते वो आदमी मर जाएगा। अगर आप किसी को रेडियम और बहुत सारे हैवी मेटल्स आते हैं, मरकरी है ना, मरकरी वाली मेटल है, और या सॉल्ट में जैसे पोटेशियम साइनाइड हो गया, ये वन मोर हैवी मेटल है पोलोनियम। This is the beryllium, magnesium, calcium, barium, and strontium. Strontium, barium, and radium all have common valency is going to be 2. इन सबकी जो common valency है, that is going to be 2. The charge is also fixed. All are divalent. सबकी valency 2 है, तो they're mostly abundant in earth crust में मिलता है हमें।
नेक्स्ट हम कर लेंगे नेम ऑफ एलिमेंट। हैविंग atomic number greater than 100, greater than, if there is a 0, I have to write nil, nil. And if there is 1, you will say unicellular. I will tell more poem after some time, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। Then if the 2 by 3 and try 4, then it is quadrilateral. This is quadrium. 2UAD. And if it is 5, it's going to be pentagon. If it is 6, HEX. Finally, if it is 7, if it is 6, SEPT, HEX. This is for, finally, if it is 7, if it is Inorganic 6, IPSC, got it? It's for SEPT, inorganic. HEX. And if there is 8, this is octopus. 9, this is N. Inna. In what it. Chalo. These are the 3 alphabet and 1 alphabet symbol is there, 1 letter symbol की अगर हम बात करेंगे, there is a 1 letter symbol. So you have to write here N only, U only B, only T, only Q, only P, only H, S, O, E. चलो, now we will plan a game. ये तो थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको एक कंप्लीट करते हैं, then we will play a game. इस पे हम गेम खेलते हैं, है ना? Before that नहीं, पहले हम इस पे काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका काम कर लो। मान लो आपके पास है 101, तो what will be the name of this element? 1 के लिए आपको लिखना U, 0 के लिए लिखना nil, UNU, और इसका कंप्लीट नेम होगा, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड फनी नेम, इसका नेम होगा अननिल, सारे मेटल के लास्ट के नाम में IUM आता है, अनिल उन्नियम, दिस इज वेरी फनी नेम, अनिल उन्नियम। लेट बी हैव द नेम 105, तो आपको बोलना अन माने 1, निल मीन्स 0, and 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट, लास्ट में IUM, अनिल पेंटियम। Suppose the element is coming 119. This is the recent discovered element. So this is the new discovery of element having atomic number 119. इसकी नंबरिंग की नेमिंग करोगे UE, ununium, UN. A very funny name, ununium. Very funny. It's all South Indian name. I hope scientists को ये बड़ा अच्छा लगता है, the funny name, और for it, on after that we will start a game, a funny game. हमारे पास एक, I will make a square where you have to suggest कि हमें कौन से सिंबल को डालने से केमिस्ट्री का कौन सा एलिमेंट आने वाला है। तो जो मैक्सिमम ज्यादा बॉक्सेस सजेस्ट करेगा, तो
obviously he will be more intelligent. I will draw a square. एक छोटा सा स्क्वायर ड्रा करता हूँ और उसमें I will put some symbols. वहां पे हम कुछ सिंबल्स डालते हैं. हमें ऐसे सिंबल ढूंढने हैं जहां पे सिंबल ऑफ एलिमेंट आ जाए. दैट मस्ट बी देयर इन पीरियोडिक टेबल. व्हाट इट. जैसे हमने इसमें डाल दिया. सपोज मैंने डाल दिया ओ यस दिस नेम इज देयर इन पीरियोडिक टेबल. तो मेरा स्कोर आ गया. माई स्कोर. मेरे स्कोर में एक अल्फाबेट आ चुका है. वन एलिमेंट इज विद मी. तो एनीवन सजेस्ट. संस्कृति चलो बताओ एनी सजेशन. जो any name of a symbol of any element. n. वेरी गुड. अगर हम यहाँ पे n भर देते हैं चलो तो मैं इसको भर देता हूँ n n n n n. तो आप कहीं पे भर सकते हो कोई टेंशन नहीं है. साउथ इंडियन साउथ इंडियन केमिस्ट का नेम. What it. यहाँ पे अगर मैं if I'm going to put there, तो जल्दी से इस गेम को कंप्लीट करते हैं. जस्ट फॉर एंजॉयमेंट. मैं इसका एक I will put some more, I will put here S. और इसको कलेक्टिवली आप यहां से यहां तक कवर कर लो. What the name of this element? It's me, no one else. It's my name and I am osmium. मेरा नाम है osmium. मैं ओम सर और मेरा नाम osmium भी है. चलो नेक्स्ट. एनी मोर अल्फाबेट्स. अगर आप दो डबल अल्फाबेट के सिंबल बना लेते हो तो आपको उस पर डबल नंबर मिल सकते हैं. तो मेरे को डबल. वन मोर स्टूडेंट उसको मिलेगा एस से. उसको मिला 1 मार्क्स. लेट्स होप एनीवन एल्स. बहुत लैग हो रहा है. Any more suggestion? Sanskriti, any more suggestion? FE. Symbol? FE. FE. You can write only one symbol. You can have only one symbol, like you can have either F at a time only verb. You will get one more marks. मैं इसमें से मिला के देखो मैं तुम्हें बताता हूँ. I will make some more symbol that like n. मैं कुछ सोच रहा था मेरे को कुछ मिलने वाला था. Like I will get osmium हो चुका है. Oh very good. I will put for A and I will get here like this. इन दोनों को क्लब करो. I will get arsenic. Oh, this is the way, to get double marks. Chalo. Finally, I am the winner. Yes, I am the winner. Like that, you can think something more, Chalo, we will come back. हम लोग अब वापस आते हैं. Name of the elements, Name of the element belong to group 13. आप ऐसे funny game कर सकते हो so that you can remember, name of elements. Name of element of group 13. ग्रुप 13 की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव बाबा. बाबा ब्लैक सेफ. हैव यू एनी वन? नो. This is boron, aluminum, this is the gallium, this is the indium, got it? And this is the thallium.
उसके बाद एक और एलिमेंट आजकल आता है, दैट इज NH. Atomic number is here 5, and if you add the magic number you will get here 13, and that magic number अगर आप ऐड करते हो तो you will get 31. That magic number ऐड करोगे you will get 49, and another magic number if you add 32, 81, 113. This is the 113. Got it? So this is all about, the first element is your very common, that's we know that already boron is हमारा पुराना दोस्त है, and the आलू तो हमारे पास हमेशा रहती है. Aluminium is very important metal for us, most of the utensils, electric wire, और गाली देना तो हम लोग बचपन से जानते हैं और गलियों में भी घूमते रहते हैं, तो गैलियम. और हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो बी ऑल आर इंडियन. आई एम इंडियन, आई एम नॉट इंडियन, आई एम इंडियन. वाह, वेरी नाइस. ऐसे भी बोल सकते हैं ना. हाँ, तो अंदर इज थालियम, और इंडिया की थाली में खाना खाते हैं तो थालियम तो बोला ही जा सकता है. और भाई खाना पीना हो गया तो नहाने भी तो जाना रहता है, नहोनियम, है ना. ये थोड़ा सा ना लास्ट एलिमेंट है, दैट इज द नहोनियम. पानी है. Name got it? Now, what the poem is there, Baba Ali Gaye India to Thailand नहाने. इंडिया टू थाईलैंड कहाँ गए? बीच में नहाने गए. और ये नोनियम हो गया नहाने. तो ऑल हैव द कॉमन बैलेंसी. अगर बात करेंगे इन सबकी जो कॉमन बैलेंसी है, दैट इज गोइंग टू बी 3, वेरी कॉमन. एंड वन मोर बैलेंसी वी विल गेट 1, 3 and 1. Downside you will get 3 and 1 both, and boron and aluminum they have common valency 3. इनकी कॉमन बैलेंसी 3 मिलती है. बट अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं गैलियम टू नहोनियम, तो हमें 3 और 1 दोनों बैलेंसी मिलते हैं. अब इसके बाद हम नेक्स्ट आएगा, दैट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. तो विल टेक Short break, after this you have to go and discuss Mendeleev periodic law. मेंडलीव का नेम बहुत ही डिफिकल्ट है ना, डिमिट्री मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव. But this law is very important. We'll take a little break for the name of the element. Later on हम इसको दोबारा start करेंगे. That is that new part is your Mendeleev periodic law. Mendeleev periodic law. This is very important question for exam point of view. Mendeleev periodic law is very important. Most of the time this is coming in 2 marks. To write the only statement in the examination. Class 11th के examination के point से बहुत important है.
What you write that properties of the elements are properties of the elements are periodic function of their atomic mass. Properties of the elements are periodic function of their atomic mass. What do you mean by this? Means elements की जो properties हैं वो they are the function means उस पर dependent है. किस पे dependent है? Atomic mass. As soon as atomic mass is going to vary, the properties also going to vary. Got it? Properties of the elements are the very important factor. They are going to depend upon the atomic mass. So this was the statement given by the Mendeleev. But at the time of Mendeleev, number of elements was not much more. क्या किया था? He arranged the element in increasing order of atomic mass. He arranged the elements in increasing order of atomic masses or atomic mass. He arranged the element in increasing order of their atomic mass. Elements को उसको atomic mass के increasing order में उन्होंने place करके रखा. And he got the periodicity. That is a term you will get, periodicity. After a regular interval, there was a repetition of element having similar properties. तो इनको आगे चल के बात notice होती है कि there is repetition मिलता है. There was repetition of properties, similar properties of the elements. But before that, you will say that in Mendeleev periodic table, Mendeleev periodic table, there was 9 groups. Including means 0 group. अगर हम 9 group तब बोलते हैं including 0. And Seven periods. इसके बाद आपको बोलना है nine group and 7 periods. अब इन्होंने क्या किया? 1 to 7 ग्रुप में उन्होंने सब डिवीजन किया. जैसे इनसाइड द स्कूल, किसी स्कूल में मान लो क्लास 7 तक के 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि क्लास 1 से लेकर के 7 तक में सब डिवीजन करके रखा. दो सेक्शन थे, 1A 1B 2A 2B. लाइक 10th में 10th A 10th B सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं. बच्चे ज्यादा है, हम उनमें सेक्शन डिवीजन कर देते हैं. सेम द डिड मेंडेलीव ने भी यही काम किया. व्हाट ही डिड, 1 to 7 के ग्रुप में उन्होंने दो सब सेक्शंस बना दिए. डिवाइडेड इनटू 1 to 7 में दो सब सेक्शन है. तो आपको याद कर रखना कि इसमें ग्रुप कैसे रन करेगा? ग्रुप रन टॉप टू बॉटम.
top to bottom. It's like that, Whereas period की अगर बात करेंगे तो period runs from left to right. Left to right. Number of period is equal to cell number. If you have any doubt, आप आराम से इसको check कर सकते हो. Number of periods. How many periods are there, So number of period is equal to cell number. In the randomly अगर आपको कभी भी किसी भी element का period find out करना है, what I have to see that हमें उसका cell number check करना रहता है. For example, suppose करो मैंने sodium ले लिया. Its atomic number is 11. Write the configuration 2, 8, 1. As soon as you write the configuration, you will get K cell, L cell and M cell. Number of cell is equal to number of period. तो इसका मकान 3 BHK का है. तो सोडियम का जो घर होगा, that will be in third period. So number of cell is equal to number of period. It's very easy to identify, Next, what else he did? Group 1 to 7 divided into 2 subgroup, A and B. Group 1 to 7 further divided into subgroup. Sections में division कर दिया उन्होंने. That section was A and B respectively. But group 8 has no subdivisions. Group 8 have no subgroup. Consist of set of 3 elements. Top to bottom. Top to bottom. This is the basic planning done by the Mendeleev. For example, I will explain a little bit. This is the group first. The group first में उन्होंने क्या किया? Subdivision कर दिया. 1A and 1B. What 1A की अगर हम बात करेंगे तो that was first hydrogen. Then after lithium. Then after sodium. Then potassium. Rubidium. Cesium. Last one are the francium. First B की बात करेंगे तो you will get copper, Ag, Au. This is the first group. All have common valency 1. तो ये काम अच्छा था इनका. Common valency is 1. Like copper can show. Copper की valency का देखो तो copper के ऊपर show करता है. Silver also show the common valency Ag plus. और alkali metal में सारे के सारी common valency +1 करते हैं. So this grouping was not bad. This was a good, but it has a certain drawback also. कि इन सारे जो elements है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? Coin metals.
They are known as coinage metals. इनके हम सिक्के बनाते हैं. Very expensive, very less reactive. What it? Coinage metal है. Very less reactive means noble metals के सीरीज में चला जाता है. So keeping these metal along with the alkali metal is not good because they are most reactive. Valence is matching, then उन्होंने मेंडलीफ ने इसको इसमें रख दिया. But dissimilarity भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. Here the lithium is the such element है. जो lithium का element है, this shows common behavior with both. lithium का जो behavior है वो दोनों से मिलता है. Lithium shows common behavior with. You might have seen the 2 क्लासरूम का मॉनिटर कभी कभी एक हो जाता है. तो लिथियम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ब्रिज एलिमेंट, क्योंकि इसके दोस्त ना दोनों क्लास में रहते हैं. ब्रिज एलिमेंट का मतलब द एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी विद द सब ग्रुप, है ना. द एलिमेंट shows similar property with their subgroup elements. जो अपने क्लास के दोस्त क्लासमेट्स के साथ तो रहता ही है, अपने नियर बाई जो क्लासमेट्स हैं अनदर सेक्शन में उनके भी उसके दोस्त हैं. ये इसका लीडरशिप हो गई. फर्स्ट भी दोनों का फ्रेंड है तो इसको हम ब्रिज एलिमेंट बोल सकते हैं. सिमिलर टू दैट सेकेंड और सेकेंड में भी आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल जाएगी. ऐसी आपको सेम सिचुएशन मिल सकती है ग्रुप सेकंड में. ग्रुप सेकंड में जो बॉस होता है तो बेरिलियम रहेगा, वैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम. एंड सेकंड बी की बात करेंगे तो दैट इज सेकंड बी मॉडर्न का भी सेकंड बी है और ये ग्रुप सेकंड है. और यहाँ पे हमें जो मिलने वाला है कैल्शियम के बाद दैट इज द जिंक. तो दिस इज ओल्ड में इसको हम सेकंड बी के मेंबर मानते हैं. करंट में ग्रुप 12 है, ग्रुप 12. जिंक, कैडमियम एंड मरकरी दे ऑल हैव कॉमन वैलेंसी 2. तो इनको साथ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन कीप देम इन टुगेदर. ब्रिज एलिमेंट किसका कौन सा रोल प्ले करेगा? बेरिलियम. तो बेरिलियम इज गोइंग टू बी द रोल ऑफ ब्रिज एलिमेंट. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी की सिमिलरिटी सेम है. कॉपर एज मॉडर्न में हमारे ग्रुप 11 में रहते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो दिस इज द 11th ग्रुप. द ओल्ड देखोगे तो दैट विल बी द फर्स्ट बी. दिस इज द सेकंड बी. दिस इज द सेकंड ए. Second A and second B. We have to discuss till now only today, and tomorrow we will continue with the same. We will discuss some more positive points and drawbacks of modern Mendeleev periodic table, their limitations, and after that we will begin with the modern periodic classification of the elements. Best of luck. Have a nice day ahead. Is there any doubt you can ask? नहीं डाउट है. गुड थिंग. ये तो इजी है वैसे हमारे लिए. ब्रिज एलिमेंट में थोड़ा डाउट आता है.